अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम इंट्रोडक्शन से आगे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखते हैं। अलजेब्रा में हमें क्या देखना है? इफ़ वी हैव टू फंक्शंस से एफ एक्स जी एक्स, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, बट हियर प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होती है जो पोलिनोमियल फॉर्म में होगी। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल फंक्शन if f of x is given by a0 plus a1x plus a2x square plus so on up to a n x, where a0, a1, a2 so on, these are constants. This is a polynomial function of degree n if an is not equal to 0. ठीक, now we know that limit x tends to a, x is equal to a. ठीक है, limit x tends to a, x is equal to a, hence limit x tends to a x square वो आएगा लिमिट x tends to a x square लिख सकते हैं हम x into x। और हमने अभी पढ़ा लिमिट x tends to a f of x into g of x बराबर होता है लिमिट x tends to a into लिमिट x tends to a g of x f of x into g of x। ठीक, तो वो आएगा a into a, that is a square. Similarly we can say that limit x tends to a x raised power n is equal to a raised power n. ठीक है, नाउ पोलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमारा होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन एक्स रेज्ड पावर एन। नाउ वी यूज द प्रीवियस थ्योरम फर्स्ट जो हमारी थी थ्योरम 1। ठीक है, we use algebra of limits to find the limit of this very polynomial function। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें देखना है लिमिट x टेंड्स टू a f of x। ठीक, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो है e नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस e टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन। अब हमें पता है लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x आता है लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे भी अलग अलग लिमिट देंगे तो क्या मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू a नॉट प्लस लिमिट x टेंड्स टू a वन एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस लिमिट x टेंड्स टू a n x रेज्ड पावर n। ठीक, ये बराबर हुआ a नॉट, क्योंकि x है ही नहीं तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, a नॉट प्लस a वन बाहर आएगा लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस ए टू बाहर लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन लिमिट ए एन लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स रेज्ड पावर n। ठीक, अब हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स ए के बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो हमें मिलेगा ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन ए रेज्ड पावर n। This is equal to f of a. That means if we have a polynomial function f of x, then limit x tends to a f of x equal to f of a. That means if we have to find the limit of a polynomial function, we simply substitute a in place of x. Okay, now this was about polynomial function. Now if we have a rational function, firstly you should know what is a rational function. A function f of x is said to be a rational function if it is in the form of g of x divided by h of x, where g of x and h of x are both polynomial functions and provided h of x must not equal to 0.
This is the definition of rational function. Now if we have to find the limit of a rational function, we simply use algebra of limits, part 4 of term first, that is limit x tends to a f of x equal to limit x tends to a f of x का value, that is g of x by h of x. This is equal to limit x tends to a g of x divided by limit x tends to a h of x. Now g of x and h of x are both polynomial functions, and we know that if f of x is a polynomial function, then limit x tends to a f of x is equal to f of a. So here g of x and h of x are polynomial functions. Being polynomial functions, limit x tends to a g of x equal to g of a, and limit x tends to a h of x equal to h of a. And hence, if we have a rational function f of x is given by g of x by h of x, then limit x tends to a f of x is equal to g of a divided by h of a. But here one thing, we should remember one thing, that the denominator, that our h of x must not equal to 0. Okay. नेक्स्ट थ्योरम सेकंड जो है वो है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंड्स टू a x raised power n minus a raised power n divided by x minus a is equal to n a n minus 1. ठीक, the expression in the above theorem for the limits is true even if n is any rational number and a is a positive integer. ठीक, dividing x raised power n minus a raised power n by x minus a, we see that x raised power n minus a raised power n is equal to x minus a into x raised power n minus 1 plus x raised power n minus 2 into a plus x raised power n minus 3 into a square plus so on up to x into a raised power n minus 2 plus a raised power n minus 1. And thus limit x tends to a x raised power n minus a raised power n divided by x minus a equal to limit x tends to a into this x raised power n minus 1 plus x raised power n minus 2 into a plus so on. Okay, now when we this is a polynomial function, and hence we can find its limit by direct substitution. We get a raised power n minus 1 plus a raised power a into a raised power n minus 2 plus so on plus a raised power n minus 2 into a plus a raised power n minus 1. ठीक, which is equal to a raised power n minus 1 plus a raised power n minus 1 plus so on up to a raised power n minus 1 n times, which is equal to n into a raised power n minus 1. Okay, one more example about the polynomial functions. We have to find the limits of polynomial functions. The very first part is limit x tends to 1 x cube minus x square plus 1. Next is limit x tends to 3 x into x plus 1. Next is limit x tends to 1 minus 1 plus x square plus 1 up to x raised power 10. All of these are polynomial functions, and we know that we know how to find the limit of a polynomial function. When we have to find the limit of a polynomial function, we simply directly substitute the value of x. Okay, like our first part is that we have to find limit x tends to 1 x cube minus x square plus 1, which is equal to 1 cube minus 1 square plus 1, which is equal to 1. Okay, similarly limit x tends to 3 x into x plus 1, which is equal to 3 into 3 plus 1, which is equal to 12. Next is limit x tends to minus 1 plus x square. Again, this is being a polynomial function. This being a polynomial function, we directly substitute the value of x equal to minus 1. We get 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. Okay, or 1 minus 1 plus minus 1 square plus minus 1 cube plus so on up to minus 1 raised to power 10, which is equal to 1. Then minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 alternatively. Lastly we get only 1. Okay, ठीक है. algebra of limits हमने पढ़ा. limit f of plus minus g, f limit f plus minus g is equal to limit f plus minus limit g. Limit f into g equal to limit f into limit g plus next limit f by g equal to limit of f by limit of g, provided g not equal to 0. ठीक है.
और पोलनॉमियल फंक्शंस का लिमिट अगर हमें देखना है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सिमिलरली रैशनल फंक्शन के लिए भी, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन भी मैंने बोली है, फंक्शन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ g of x by h of x where g and h are polynomial functions is called a rational function and limit of a rational function is simply g of a by h of a। नेक्स्ट हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे पोलनॉमियल फंक्शंस पे जहाँ पे हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया और हमने लिमिट निकाला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।